Hello students, the question is a ball having kinetic energy Ke is projected at an angle of 60 degrees from the horizontal. What will be the kinetic energy of the ball at the highest point of its flight? And the given options are option 1 Ke by 8, option 2 Ke by 4, option 3 Ke by 16 and option 4 Ke by 2. So the problem is based on the topic projectile motion. In this particular problem, a ball is thrown at an angle of 60 degree with the horizontal. So the initial kinetic energy of the ball is given as Ke. So we have to find out its kinetic energy at the highest point. Suppose this is the highest point. Let us call this point as point B. For example, this is point A from which the projectile is thrown, the ball is thrown, and the point B is having the highest point. It's the highest point, and we have to find out the kinetic energy at this point. So this is the problem. Now we know that suppose if there is any projectile thrown with velocity of u, initial velocity of u, then it has two components. First one is the horizontal component of its velocity, which is given by u cos theta, where theta is the projectile angle. In this case, it is 60 degrees. So the horizontal component of velocity is u cos 60 degrees. And the vertical component of velocity in this case, you can easily see that it is u sine 60 degrees. Now what happens that when this particular ball or any projectile it goes in the upward direction, its a vertical component of velocity it lower downs, it becomes less and less, and as it reaches the highest point, that is the point B, the vertical component of this velocity becomes zero at the highest point. But the important thing is this, that for any projectile, the horizontal component of the velocity remains same. For example, there is some intermediate point. This is suppose some intermediate point C. Here is also the horizontal component u cos theta or u cos 60 in this case. And at the top point also, the horizontal component of velocity is u cos 60 degrees. So we can say that if the kinetic energy at the initial point is Ke, so this Ke is equal to half mu square. So the kinetic energy at the topmost point, let us call it as Ke dash. So it is equal to half m of u cos 60 whole square, because at the topmost point the horizontal component of velocity is u cos 60 and cos 60 is 1 by 2. So it means that u by 2, this value is u by 2. So putting this value here, half of m u by 2 whole square. So this becomes 1 by 4 times m u square. So 1 by 4 into 1 by 2 into 1 by 2 whole mu square. Now we can call it as 1 by 4 multiplied by the kinetic energy Ke at the initial point. So from equation 1, now let us call it as Ke I at the initial. So this is Ke I basically. In this problem it is given as Ke. So this value comes out to be Ke by 4. The kinetic energy at the topmost point Ke dash comes out to be Ke by 4, where the initial kinetic energy is Ke here. So option 2 is correct here, Ke by 4. यह प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है एक बॉल को एक काइनेटिक एनर्जी के से प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए। पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट पे क्या होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं के बाई 8, के बाई 4, के बाई 16 एंड के बाई 2। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वही होगा कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है अप टू द एंड पॉइंट, जब तक ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी कंप्लीट कर देता है, ठीक उस टाइम पे भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज इट इज मेंटेन रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए चलें, अगर हम किसी भी तरीके के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए चलें तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये चेंज होता रहता है। तो अगर ये u sin 60 इसकी इनिशियल वैल्यू है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वैल्यू जो है घट के 0 हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से इसकी वैल्यू चेंज होने लगती है।
तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे हम सपोज कहते हैं हाफ एम यू स्क्वायर, अगर हम इसकी इनिशियल स्पीड को यू मानते हुए चल रहे हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि वेलोसिटी केवल u cos 60 डिग्री है, क्योंकि केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही रह गया है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इस तरह से u/2। तो काइनेटिक एनर्जी ठीक इस पॉइंट पर अगर हमें निकालनी हो तो हमें लिखना होगा हाफ एम u cos 60 होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके वैल्यू आती है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एम यू स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर किसके बराबर है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, यानी के ई के। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी 1/4 टाइम्स के ई। तो इस तरह से ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।